Hi guys, welcome to NicheMarketers Club Freelancers Week Wednesday. This is like every Wednesday, every second and fourth Wednesday we have the freelancers meeting, and every first and third we have the agency owners meeting. And today in the session we're going to cover about two important topics. One is how to uh, sell these three services using AI as an agency or a freelancer. And then we'll be covering, Abhishek Goklani will be covering about the Midjourney thing, like how to use Midjourney to generate images. And afterwards we'll have a short Q&A and then we'll go forward. So let me share the screen and showcase you. So now I think just let me know if you're seeing the screen. Can someone confirm if you're able to see the screen? Yeah, You can see. it's visible. Okay, so this is a very short presentation, but I felt after filtering a lot, I found this is something very interesting. So this is one tool which is like, it's called video.ai, and I use this tool to create short form videos from a long video. There is one video I did on, I uploaded it on YouTube, which is like 13 golden nuggets to consume content online. And I just added the YouTube URL. And what it did is within like 5 minutes, it gave me like approximately 10 short form videos, uh, which are quite accurately trimmed. Means the starting and ending is quite accurate. So the precision is great. So I like that. So if let us say you're working for a client or a client who's having who does webinars or who has long form video content. So for this client, you can sell this service of creating short form content out of the long form videos. And generally what happens, why clients don't do or agencies don't do this is because it's generally time taking when it comes to doing it in the traditional way, like you use Adobe tools or maybe other tools to actually edit the videos and trim them and correct, exactly find out the points and all. It takes quite some time, but what happened for me, it actually could uh, do it in like very short span. I don't know, the accuracy can be different with different kinds of videos, but I feel like whatever I experienced, I felt the accuracy is good. So minimal amount of manual work is needed. So what you can do, you can actually sell this as a सर्विस टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, सेइंग दैट आपका पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के देंगे आपके लिए. सो एंड यू कैन चार्ज ए नॉमिनल फीस. एंड यहाँ पे प्राइसिंग भी उसका इतना मतलब ना, इट्स नॉट वेरी वेरी कॉस्टली हियर. I'll also show the pricing in the after the presentation. एक एक का pricing भी देख लेते हैं, how does it turn out. But this is one service, like creating short form content from the long form content. That is one thing you can offer. Second thing is, if you're working with e-commerce brands, D2C brands, or maybe any other uh, businesses who are actually selling on Amazon or marketplaces. So these people might have product images, normal product images, and they want better product images. And this is one website called flair.ai, FLAIR.ai. And this is very interesting, where you add the image and then it will create a beautiful product image. So this also I felt is very useful, and you can actually offer this as a, let us say you have 100 products, your client is having 100 products, and the client can get this kind of images done pretty quickly. You can actually, if you're charging on a bulk basis, you charge even just 500 rupees per an image also, you can make some good amount of money. That's what I felt. Depends upon the use cases. This can be mixed and matched to make quick money, or else you can use this to actually further improve the images and all. Like you can use it as a combination thing.
alongside your design work you do, etc. So this is one more thing I feel like if you have an e-commerce client and they want product photography images and all, this can be very interesting thing to offer. The third one is Flicky.ai. This is also very interesting where you need to just input the script of the video. Then you can actually create the voiceover, create video, image, and transition. Everything is done in this same one platform. So if there is a client of yours whom you want to make videos, if they ask you to make videos and their client doesn't want to come or show their face, they don't want to show, so then you need to figure out how to do the videos. And also that I felt this is an interesting way to actually kind of create full-fledged videos. Maybe for a video creation, generally people charge like, at least per a minute they charge like 2,000, 3,000, 5,000, depends. Like, so you can charge even lesser and still able to get some profit out of it. So these three tools, I felt like if you use it in combination, like in your team, if an agency in your team, you have a video guy who does this kind of thing, and if this guy can actually use these tools in combination with the skill set he has, I think these three services can be sold, or you can introduce these services as a new things, new offerings to your existing clients. So these are the three services. I just want to know your thoughts, like all these three services. What do you think? How practical it is, or your views? There's nothing like hard and fast that this is correct or wrong. But I felt that these three are something after having read a lot of content or consuming a lot of content on AI. I felt that these three tools are quite interesting, which can be used in our business to get some leverage. Any thoughts on this, Abhishek? You're into content creation. Yeah, I mean, it's really interesting to get started, like how best use we can make of all these tools. It's like trying out more and more and see what fits or suits best to you. Like there are multiple tools. It's like the more you try, the more you'll get acquainted, like what's your purpose and all. Yeah. So one more thing what I observed with these tools is like they're not perfect, but what I observed is most of the tools can make your job easier. While Mhm. many people are trying to think in these ways, like I don't want to lift a finger. That's the thing. But generally it doesn't work like that. So I feel like maybe you're a video guy. So did you use any of these tools, Abhishek? Did you try? Not yet. I mean, try to use DID, that AI tool, for some time. And also with these sort of tools, what is lacking a sort of customization. Like what's more required is like revisions that we used to have once we submitted to the client. But one drawback with all these tools is like they limit us to all those revisions basically. So for that, this is the restriction that we have initially with the revisions part. But yeah, if you want to use it, I mean, just for, I mean, where there are chances of minimum revisions, these tools come quite handy. Yeah, correct. And sometimes what happens is clients may not want a very perfect output, but they want something to move on. So they Budget friendly sort of. Yeah. budget friendly projects के लिए शायद it can be a good Yeah. option. There you can also put your point like, yeah, we are providing you at a budget thing. You can compromise on budget part, and I am compromising on budget part, and you compromise on revision part. So Yeah. this way we can have a win-win situation for both of us. Anyone else who thinks that these are the services, or any other guys think that what are the kind of services they're trying to provide using AI? Like right now, means leveraging AI. I'm not saying Like, completely AI. yeah, these days, I mean, the text to voice is something that is, uh, I mean, we know there are a lot of tools who are on paid basis as well, where we are trying to convert text to voice. But I mean, somehow they feel like automated. Like still there is a lot of scope of improvement.
But yeah, there is a tool called 11 Labs. I'm trying that out. So this is coming out to be more closer to realism. In fact, they have certain options where you can put your or give your voice, and they can modify it accordingly and provide automated voice on the basis of that. But yeah, that's Voice, it's called voice cloning. yeah, It clones your voice and it tries to generate exactly. the same kind of output. Yeah. Yeah, I think I also heard very good things about 11 Labs. Like people were saying, whoever is like very much into AI tools, they're recommending 11 Labs. And recently I came across one tool Mhm. called Revoicer, uh, which I came across as a Facebook ad. And in that, they are actually talking about one more angle where uh, the avatar, the voice assistant can get angry, get Mm. happy, sad, Emotions, emotional emotional, tools. and their advertisement, na, wherever they're actually showcasing, Mm. that seemed pretty good. But I did not try it right now because right now it's on an LTD or something like that. So I think these are use cases where people don't speak. I can't speak for myself. Like if I'm able to do it myself, I'll not use all those tools. But for sometimes what happens, the clients will say, yeah, I need to get a video, but I'll not come before the camera and speak. I can't do that. हमारा brand के लिए कुछ videos बनाना है, but we can't come in between. They don't want to show the face and that thing. That's the challenge. What I actually see in general cases. So that there in that cases, people are using these tools. I think, like you said, text to voice and any other use cases, guys. Anyone who's actually seeing like leveraging AI and able to get more productivity for their work, whatever they're doing. Anyone has any thoughts? Uh, yes, I am using QA Pop. It's a Quora. Yeah. Hmm. Yeah, for the Quora questions for research work, I am using that one. And it's kind of helpful. And also using ScaleNot uh, for like clients, blogs and content creation things. So I'm taking help from ScaleNot. It's a Okay. AI tool. Yeah, this tool I'm using, and few other tools are there like for video captions and other things. So I used one is Mhm. Flex Clip, something like that. I want not to remember the proper name. Okay. Okay. You're using And social media content creation. Is it like that? yes, I tried with few tools and also using ChatGPT also. Yeah, ChatGPT is commonly used. Like, but again, ChatGPT. I also want. ChatGPT I'm using free, and ScaleNot it's a paid. ScaleNot keep up with the paid tool. Yeah, ScaleNet is right now. I think it's a old tool as well. But nowadays every tool is telling themselves as an AI tool because that's how market is. Yes, yes. Even courses also became like an AI digital marketing course. I'm saying few ads with AI digital marketing course. Correct, John. Yes, yes. Yeah, for everything like now, right now, adding AI is like it's like a trendy thing. Uh, like it's going on. That's interesting. So guys, let us then welcome. Anyone else want to share anything before we move on to Abhishek, who will show us the Midjourney thing? Yeah, there is one more tool like which I came across it. Its name is altered.ai. Has anybody tried that? Altered? Yeah, No, I did not. Try it. it's like you could just change your voice to like say for example like your voice is not good, or you believe that your voice doesn't sound well. You could use some common actor voice or anything like किसी का भी use में ले सकते हो. Okay, okay. This And is it's a very pretty good, and that tool is pretty good. No, I saw it, the like certain videos of it, and the voice was like it's for like deep fake technology for voices, I would say that. yeah. Yeah, yes, man. See, these tools are great for introverted creators.
Yeah, correct, Mansi. But there's another angle to it, na? Apart from the creator thing, I think there is something like clients want or businesses want some video creation, but there is no face who is coming forward to actually uh, they will not show their first face. They want to get the videos done. In that cases, I see like still these tools can be maybe they can be used. I'm not sure. Yeah, for creating. Yeah, exactly. Like if I could change my voice to some actor voice, why won't I run my ad campaigns in FM? Like FM is a big market. Like I'm from Jaipur और FM यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, and there are big realtors जो अपने advertisements use कर रहे हैं. They are using Akshay Kumar voice. So why not, like अगर मेरी आवाज change करके मैं कर, I don't know like if it is legal or not to use some लीगल other, लीगल नहीं है वो, लीगल नहीं है ऑब्वियसली. but like how they are going to find it out, like if वो केवल जज करने के लिए है. मेरे को थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा, दैट्स इट. Yeah, किसी that's the problem. Actually problem is like uh, it's a challenge thing. अभी ए के साथ ये सब आने वाला है. Like these are the things which are going to come up. Let us see how does that work. So let us yeah, it's good that you brought this up. and Alted.a. Let us check. yeah, I read an article also कि एक like there was a photographer, उसने अपने कुछ photographs डाली थी, and some AI company they used his photographs for training their tool, AI tool. ओके, एंड उसने जो फोटोग्राफर था उसने केस किया उनके ऊपर, एंड अल्टीमेटली उसने जो एआई कंपनी थी दे इनफैक्ट इन रिटर्न सूट दैट फोटोग्राफर. लाइक दैट वाज अ क्रेजी थिंग. अच्छा. मतलब वो कि भाई तुम हमको तुम्हारी फोटोज हम यूज में ले रहे हैं और इस तरीके से तुम कैसे कर रहे हो. आई वाज लाइक प्रीटी कंफ्यूजन कि भाई तुम उसकी फोटो यूज में ले रहे हैं एंड अगेन यू आर शोइंग इट, लाइक उसी को आप कैसे कर सकते हो केस. So some crazy stuff is going on in this AI. This is going to happen, and let us see. I think things will get bigger and some regulations will come, then laws and regulations will come. Let us see. That's a bigger point of discussion. अभी मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि it's a never ending thing. बहुत बहुत लंबा चलेगा. Let us give it to Abhishek. So Abhishek, you can come on and present. Yeah. So I That mean, means all this was, yeah, this session in fact was planned in quite random. no, So you don't need to be formal. You just keep it yeah. simple. आप अगर just tool open करके भी you can just showcase. And second, I'm not good at uh, delivering stuff. So yeah, pardon me for that. So whatever best I could, I'll try my best. Yeah, in a informal way. So basically, like Midjourney, it's. Can I share my screen? Yeah, yes. Can you provide the access? I mean, I'm not नहीं हो रहा able है to. क्या? एक मिनट, अभी तो मेरे co-host, so I should be able to do it. शेयर वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है नीचे. शेयर स्क्रीन. Not allowing me to share. Let me reopen this. It's asking me to reopen. Yeah. Yes, Abhishek, I think you can do it now.
Yeah, hope my screen is visible now. Yeah. Yeah, yes, yes. Okay. So basically, Midjourney is a bot that runs on a chat platform called Discord. So, I mean, in order to use that, we need to install Discord first. It's like a chat platform, just like Slack. So I have already created an account, so I'll be just logging in. Hmm. Whosoever are new just can create an account. It's very easy. Okay. I'll close that one. So yeah, once we log into Discord, next step is to log into Midjourney. Okay. So for the first time, if you're joining, you can join using beta, join the beta. So it will ask you to sign in again. Since I have already logged in or created my account on Midjourney, so I have directly logged into Discord. But whosoever are new, they'll be required to log in Midjourney. They need to sign in and authorize the Discord bot. There will be an option where you need to authorize the Discord bot. So I'll be continuing. So basically, in the left, I mean, whosoever are new, I'm just giving a walkthrough to Discord. These are basically channels, just like in Slack, we have multiple channels. We have multiple channels in Discord as well. Hmm. And this is Midjourney's channel. So for the first time when we'll be logging it, this channel, this icon is of Midjourney. So we'll be joining this channel. And I think now they have restricted the free trial. So when I started new, there were rooms called newbies. You can join any rooms. Okay. So basically, once you pay, you can also join using this newbie rooms. Just a minute. So I mean, yeah, there are multiple newbies rooms. I mean, room 1, room 2, and inside that there are multiple rooms. Yeah. So the drawback for this is like all these are being updated in seconds. So if you are using it, there are high chances that our prompt might get lost. It's like if you are providing any instruction or prompt, once we are using it, it's public. So Can't track back. it's constantly updating. So suppose if I am giving a prompt. So for the prompt, it's like initially the first prompt is imagine. It's like whenever we are giving it a prompt to imagine something or produce something, we give that prompt called /imagine. And inside that we can give any prompt. Like initially I'll be starting with a very basic anything like sunflower. I think, hi, Prashant this side. Can Yeah. we move to little advanced prompts? Because I'm sure everybody here know basic prompts. Prashant ji, let him tell. सबको पता नहीं है. So let us have this. Yeah, initially the agenda was set up as beginners, so that's why it's like. Okay. We'll be doing advanced. Yeah, अभी जो हो सकता है करिए. Let us see. Yeah.
This generating. Is it So in generating? the next second, if you, yeah. Yeah. So basically it provides 4 options. It's taking time. Mhm. You can see like I have provided the prompt, it's 78% complete. In fast mode, still it's taking this much time. So this is the prompt that I gave. And Sunflower by and the time background. it's ready, multiple other prompts are also done. After this, there are options that we have provided. It's like U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4. So these are 4 images that we have. This is first, Mhm. this is second, this is third, and this is fourth. So U is for basically upscaling. If you want to upscale, suppose the first image is that we found it useful. So we'll be upscaling this using U1. So we'll be getting this upscaled version of this image. Likewise, if we want to produce variant of this image, like there are 4 different options, but we want to have more variants of this option. So we'll be clicking on V1 variants. Yeah. And one more thing I want to provide, like this remix came up. It's like initially before prompt, this first setting is like we need to configure. It's like by typing /settings, we can enter the setting mode. All the other settings, we can keep it intact. This remix mode is something that I've kept intentionally open. So like in real example, like if I wanted to show, when I click to this V1, as I've configured to this remix prompt, this option came because by this I can iterate the prompt that I have given initially. If I've kept this remix off, it would have simply provided me the variants. I Okay. can either iterate, like suppose sunflower in Himalayas with sun in background. Mhm. So I can iterate the existing prompt using this remix prompt. So it is always advisable to keep this on. Okay. So now it is working on the iterated prompt that I have given. So it's like I just wanted to give this idea of newbies. I'll be again moving to my dedicated server. I'll let you know how we can create a dedicated server. As you can see, it is creating another 4 versions of the variants that we have selected. Mhm. One more thing, suppose if our prompt is lost in the chat, suppose after some time we come and there are numerous other prompts, we can always click to this inbox and it will show like in the mentions tag, we can always find wherever we mentioned and we can track it. Okay. You mentioned and your stuff, you can find it from there. Yeah, by clicking on this window. Okay. So yeah, this version with the sun in background came, like we iterated it. And one more thing, Abhishek, I think जो भी लोग यहाँ पे create कर रहे हैं, chat पे लोग someone is creating something. Exactly. So it is open for. This can be used by anyone. Yeah, I mean, there is no copyright in this. I mean, it can be used. I'll in further, I'll show how we can find references and. This is quite interesting ना, अभी जितना यहाँ पे generate किया है, इसमें अगर कुछ find out करना है तो कुछ तरीका है क्या? Sorry, can you repeat this? क्या अगर बोला? से यहाँ पे जितना भी बना है इस चार्ट में या समथिंग मिडजर्नी के डिस्कॉर्ड सर्वर में जो हो रहा है, हाँ to search something. हाँ, I'll let you know कि वो हम कैसे कर सकते हैं. Like it's basically available only for the paid platform only. Oh, okay. Now it's like अभी newbies हमने explore कर लिया, but it's quite irritating कि इतना सारा आ रहा है. So for the same reason, what we do कि जब भी हम अपना account create करते हैं, we always create a dedicated server. So for this, there is a plus icon at the bottom. You can click this and create my own server. We can click for me and my friends. We can upload the icon. We can name it. It's like test MJ2.
and we have created it. Okay. So we can definitely invite other people as well, like mostly paid members only, because only then we'll be able to log in. So yeah, we have created our server. The next step is to add Midjourney bot into the server. So what we'll do, we'll again go to the Midjourney channel that was initially created. Hmm. And we'll click to this Midjourney bot icon, text, and we'll add it to the server. So there are multiple servers that I have created. It's like I'll be adding it to test MJ2, Okay. and we'll authorize it to enter our server that we have created recently. Hmm. Go to MJ2. Okay. So now we have entered our dedicated server. Here, what we can do is like we can create multiple channels. We can create multiple category. For example, if you want to have category specifically for photography, Hmm. photography prompts, we'll be creating that category. If we want to have category specifically for stock images, Hmm. to keep our work aligned and channelized, we do this. Okay. So we can create multiple categories and subcategories alongwise. Okay. So this is the the platform where we'll be using our prompts like we used in the newbie room. But यहाँ पे it's like totally our platform. यहाँ पे हम कुछ और लोगों से disturb नहीं होंगे. Hmm. Okay. Hmm. Suppose again, जैसे starting में कहा था, first prompt is always to imagine like जो भी हमको बनाना है, it's like /imagine tiger in a jungle. I'm using initially very basic prompt because जब start करना रहता है तो always start with basic, and with जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे I'll also introduce multiple parameters, उससे it will be clearer. This is available for paid plan people, huh? जो Exactly, अभी उन्होंने paid के लिए कर दिया. पहले था कि it was for free, उसमें कुछ 25 images देते थे. डेडिकेटेड सर्वर वाला जो चीज है ना, हाँ, dedicated server is only for paid. only for paid people. Yeah, So right now you're paying how much per month? it's $10 per month. $10 per month. Okay. So yeah, I have given a very basic prompt, tiger in a jungle, and as we proceed मैं इसमें parameters add करता जाऊंगा to make it clear like कि कैसे हम आगे Hmm. और parameters add करके चीजों को change कर सकते हैं. क्या लिमिट्स होगा इसका अभिषेक? लिमिट्स मानसी लिमिट्स $10 में 200 images है. 200 इमेजेस बोल रहा है मानसी. हाँ, इसमें हमेशा हम पता कर सकते हैं /info करके. इट्स लाइक तो हमारा प्लान का जो डिटेल है ओके. वो हो जाएगा. जैसे अभी हमारा लाइफ टाइम यूसेज 272 है, रिलैक्स्ड ये है. अभी मैं 64% मेरा बचा है ओके. और ये रिन्यू होगा इसमें. सो ये हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया जो हमने डाला था, टाइगर इन अ जंगल. इसमें भी मल्टीपल 4 वेरिएंट आ गए. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक जो रहता है सबसे पहले, इट्स लाइक वी कैन ऑलवेज ऐड स्टाइल. लाइक पैरामीटर ऐड करने से पहले इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना हम इस चीज को और डिटेल वे में डालेंगे और पैरामीटर्स के साथ डालेंगे, द बेटर प्रॉम्प्ट गेट्स. सपोज अभी ये था हमने /imagine टाइगर इन अ जंगल. अब इसमें हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं. इट्स लाइक वी कैन ऐड लोफाई स्टाइल. लोफी स्टाइल मतलब इट्स लाइक लोफी म्यूजिक्स होता है जिसमें लोफाई आपका. अच्छा. वी कैन ऐड पिक्सार स्टाइल, नेशनल ज्योग्राफिक स्टाइल, ओके. लीगो स्टाइल, ग्राफिटी स्टाइल, स्नो ग्लास स्टाइल आपका. सो मल्टीपल जो जो हम स्टाइल डालते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा. ओके. लाइक
अब हम पिक्सार स्टाइल डाल सकते हैं। हम्म, तो यू कैन सी कि पहले थोड़ा रियलिस्टिक में था, हम्म, अभी जैसे हमने स्टाइल चेंज किया ये उसके अकॉर्डिंग आ गया। आप कई ऐसे प्लेलिस्ट देखते होंगे जहाँ पे उस तरीके के म्यूजिक रहता है, उसके पीछे इस तरह का सेट रहता है। हम्म, ये पिक्सार स्टाइल एनिमेशन स्टाइल में थोड़ा आ गया। ओके, हाँ हाँ, लाइकवाइज हम स्टाइल चेंज कर करके मल्टीपल उसमें जा सकते हैं। इसमें मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इट्स लाइक जस्ट अ मिनट। ये लिंक मैंने शेयर किया है। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल गाइड है बेसिकली, वी कैन एक्सप्लोर मोर स्टाइल्स अकॉर्डिंगली। जो हमारा प्रॉम्प्ट होगा इट विल गेट बेटर कि किस तरीके से वी कैन कस्टमाइज इट। इज दिस इंडिपेंडेंट वेबसाइट और मिड जर्नी का ही लिंक्ड है ये चीज? नहीं, इंडिपेंडेंट है, इट्स लाइक नॉट विद। midlibrary.io। हाँ, मैंने लिंक शेयर किया है midlibrary.io। इसमें कैटेगरीज में जाके वी कैन हैव मल्टीपल स्टाइल्स। ओके, आर्टिस्टिक है, टाइल्स है, टाइटल्स है, इट्स लाइक इन फ्री टाइम यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस। ओके, इंटरेस्टिंग। वापस अपने मेडिसिन पे आते हैं। अब हम पैरामीटर्स पे आते हैं बेसिकली कि हाउ वी कैन एक्सप्लोर दिस वाया पैरामीटर। सबसे पहला जो पैरामीटर दैट वी यूज इनिशियली इट्स एस्पेक्ट रेशियो। कोई भी पैरामीटर हम डालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, इट्स लाइक डबल स्लैश जो पैरामीटर हमको डालना है। फॉर एग्जांपल इसका एस्पेक्ट रेशियो है तो इट्स AR एंड 16:9, मतलब जो आपको एस्पेक्ट रेशियो रखना है। 16:9 इज बेसिकली नॉर्मली फॉर यूट्यूब थंबनेल जो हमारा साइज होता है, या फिर यूट्यूब के जो साइज होता है वो होता है। जनरल बेसिक वीडियो फॉर्मेट। या वीडियो फॉर्मेट 9:16 इज बेसिकली फॉर मोबाइल स्क्रीन्स। 3:2 बेसिकली जितने भी हम कैमरे से DSLR से फोटो खींचते हैं, these are basically 3:2। So फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी स्क्वायर है, इट्स लाइक 1:1 रेशियो। हम इसमें 16:9 करके चेंज कर रहे यू हैं। कैन सी लाइक जो हमारा अब बनेगा वो उस एस्पेक्ट रेशियो में बनेगा। जो 4 ऑप्शंस आएंगे, स्टिल देयर विल बी 4 ऑप्शंस बट इन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16:9। ये सब प्रॉम्प्ट्स आपने कैसे सीखा है क्या, और हाउ डिड यू हाँ, लर्न? मतलब एक्सप्लोर करते हुए ऐसे, मतलब एज इन अभी तो मैं ये प्रॉम्प्ट्स बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, जैसे टाइगर इन जंगल, क्योंकि मेन हमको एक फ्लो को देखना है कि किस तरीके से हमारे पैरामीटर से आउटपुट चेंज हो रहा है। बट हाँ, इसमें एक लाइब्रेरी भी है, इट्स लाइक मिडजर्नी की खुद की भी लाइब्रेरी है, docs.midjourney.com। ओके। इसमें यू कैन फाइंड जितने भी इनके पैरामीटर्स हैं, ये सारे मैं भी बताऊंगा इसका क्या एक वो रहता है। आप खुद से भी इसमें कर सकते हो। I'll share the link at the end of the webinar. ओके, Just yeah. तो ये भी हमने देखा कि हमारा इस एस्पेक्ट रेशियो में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट है, सॉरी पैरामीटर है, दैट इज स्टाइलाइज। ओके, अगेन जैसे हम प्रॉम्प्ट में डालते हैं इट्स ऑलवेज डबल डैश जो प्रॉम्प्ट हमको करना है। फॉर एग्जांपल स्टाइलाइज का है S। स्टाइलाइज हमेशा जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो लीस्ट नंबर होता है दैट इज 0, एंड जो हाईएस्ट होता है दैट इज 1000। 0 डिफाइंस दैट इट्स लीस्ट क्रिएटिव, लाइक जो हमने प्रॉम्प्ट डाला है, जैसे भी हमारा डल रहा था, इट्स सेम। अगर हम S0 डाल रहे हैं इट्स एज सिमिलर टू नॉट पुटिंग द स्टाइलाइज थिंग। बट जैसे ही हम 1000 कर देते हैं
it gets more and more creative and artistic. Okay. So इसलिए मैंने 0 इसलिए नहीं किया because it's same as what we are doing till now. You can see Pixar style में और ये animated versions आ रहे हैं इसके, tiger in a cartoon style. हाँ So हाँ we can always like अगर हमको नहीं अच्छा लग रहा we can always refresh और see कि कैसे कर सकते हैं. So it will provide multiple options, keep on providing. अभी जो मैंने प्लान लिया उसमें 3 prompts parallelly चल सकते हैं. That's why एक already चल रहा है और एक waiting to start है. It's like in a queue. हम्म, You can see अब इसने एक बच्चे के फॉर्म में ले लिया इसको पिक्सार को, हम्म, पिक्सार स्टाइल को, बिकॉज हमने कुछ नए वेरिएंट्स के लिए बोला. सो इट्स क्योंकि हमारा जो प्रॉम्प्ट है दैट इज वेरी बेसिक. बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं किया है कि इट्स अ मेल टाइगर ऑफ मतलब ये just say बोला कि थोड़ा क्रिएटिवली कुछ दे दो मेरे को बस. एग्जैक्टली. तो ये तो यार छोटा सा टाइगर लेके आ गया ऐसा लग रहा है. हाँ, तो ये प्रोवाइड बेसिकली इसलिए करता है मल्टीपल ऑप्शंस. अब जैसे ये खत्म हुआ, इट हैज प्रोवाइडेड अस द आउटपुट, और ये सेकंड वाला प्रॉम्प्ट स्टार्ट होने वाला होगा. बेसिकली ये टाइम इसलिए ज़्यादा लेता है क्योंकि 1000 इट्स लाइक मैक्सिमम क्रिएटिविटी, सो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम. सो जब तक ये होता है लेट्स मूव टू अदर प्रॉम्प्ट्स. ये जैसे ही हो जाएगा विल कम बैक टू दिस. The other parameter it's quality, it's Q. अगेन डबल डैश Q. अब जो क्वालिटी वाला पैरामीटर होता है ये स्टार्ट होता है 0 से एंड इट गोज अप टू 1. इट्स 0, 0.25, 0.5 एंड 1. क्वालिटी बेसिकली होता है इट्स लाइक कितना डिटेल्ड हमारा इमेज होना है. 0 इट्स लाइक विद मिनिमम डिटेल्स, 1 इट्स लाइक विद मैक्सिमम डिटेल्स. यहाँ पे डिटेल्स से हमारा ये मतलब नहीं होता है कि रेजोल्यूशन बढ़ेगा. इट्स लाइक कि इमेज पे कितने और डिटेल्स हमारे आएंगे, पत्तों पे, स्किन पे कितने ज़्यादा बाल आएंगे, आँखों के जो धारियाँ होती हैं वो कितनी ज़्यादा होंगी. सो दैट सॉर्ट ऑफ डिटेल इज ऑल अबाउट डिटेल. ये अभी भी स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टाइलाइज 1000. इसमें हम वापस आएंगे अभी इसको थोड़ा सा और कम करते हुए, बट पहले क्वालिटी पे आते हैं. वी कैन गिव 0.5. जैसे जनरेट हो रहा है मैं दूसरा पैरामीटर का भी बताता चलता हूँ टू सेव टाइम. नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है क्योस, सी. डैश डैश सी. अब क्योस का जो हमारा होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 100. इट्स लाइक यू कैन सी इसमें डिटेल ज़्यादा आ गए. 0.5 मतलब पहले 0 था बट इट्स लाइक 0.5 पे इसके स्ट्राइप्स थोड़े ज़्यादा आ गए हैं. अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व डिटेल्स इसमें जो हमारे पहले थे उससे ज़्यादा है. प्रोमिनेंट दिख रहा है सब चीज लाइक हाँ, बट अगर इसको हम 1 करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगा. हाँ, सो अभी हम क्योस पे आ रहे थे. इट्स लाइक सी. 1000 नहीं हुआ ना अभी. ओके, हो या गया 1000 वाला ना. ये हाँ, है ना ये क्योस. इट्स लाइक टाइगर इन जंगल एस 1000. इट्स लाइक स्टाइलाइज करके थोड़ा सा और एक एक क्रिएटिव वे में दिखाने का ट्राई किया है. अभी तक हमारा जो था दैट वाज सॉर्ट ऑफ बेसिक, बट जैसे ही हमने स्टाइलाइज को 1000 किया है ये और क्रिएटिव हो गया. इट्स लाइक अपने एंड से जितना हो सकता है
लीव्स के बीच में लेके आना और फ्लावर्स को लेके आना. सो डिटेल्स बढ़ गए बहुत. हाँ, सो इट्स लाइक और क्रिएटिव हो जाएगा फॉर 1000. सो दैट इज स्टाइलाइज 1000. अब हमारा क्योस है. क्योस बेसिकली अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 100. 0 इट्स लाइक मिनिमम क्योस, मिनिमम वेरिएशंस. तो अगेन जितना हमारा क्लोज टू अभी हम कर रहे हैं टाइगर इन अ जंगल विदाउट एनी पैरामीटर, दैट इज क्योस 0. बट जैसे ही हम 100 करेंगे, इसमें बेसिकली ये अनयूजुअल रिजल्ट हो जाता है. स्टाइलाइज में क्या था, स्टाइलाइज थोड़ा सा और क्रिएटिव कर रहा था इस. बट क्योस इट विल मेक इट एब्रप्ट, कुछ अनयूजुअल सा बनाने का ट्राई करेगा, क्रिएटिव इन अनयूजुअल वे. और वेड, कुछ वेड सा होगा. हाँ, वियर्ड सा एग्जैक्टली. सो आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि हाँ वो आपको मैं मैक्सिमम जो है उसके दिखाऊं. बाकी आप हमेशा इन बिटवीन यूज करोगे. फॉर एग्जांपल क्योस 50, 40, 30, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होगा. ये हमेशा कुछ अगर एक्सपेरिमेंटल करना हो देन यू कैन ट्राई दिस. समटाइम्स लोग को रियलिस्टिक नहीं चाहिए, मतलब ऐसा भी यूज हाँ, केस हो सकता एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई इतने पैरामीटर्स दिए गए हैं कि वट एवर यू वांट टू यूज, आप उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर लगाओ एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. ये अब देख रहे होगे कैसे एकदम अनयूजुअल सा कुछ भी मतलब बना दिया है कि टाइगर की आंख दिख रही है. है. आधी आंख दिखाने की कोशिश किया. हाँ, अभी शायद लोड नहीं हुआ था तो मैंने पहले ही खोल दिया. लेट इट ओपन. अब हुआ लगता है. हाँ, थोड़ा सा क्लियर होगा. तो ये क्योस वाले मोड में है. अब फूल पत्ती ले आया, एक बीच में. तरह का शेर को हम्म. अ, इसकी चादर पहना दिया. सो इट्स लाइक हाँ, क्योटिक इसमें फ्लटर. फर्स्ट वाला में तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो है, चादर टाइप का ही मॉडल लग रहा है. हम्म. सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको जिसके अराउंड चाहिए उसके हम वेरिएशंस निकालते जा सकते हैं. इट विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर वेरिएंट्स अराउंड दैट. सपोज हमको आंख वाला ये चाहिए, सो इसका वेरिएंट निकालने लगेंगे. एज यू कैन सी अभी 50% हुआ है, बट मल्टीपल वेरिएशंस विद आईज वाला जो हमारा ऑप्शन था वो आने लगा है. नेक्स्ट हमारा है सीड. सीड नंबर बेसिकली. सीड जैसे हर एक इमेज बन रही है, हर एक नंबर का इमेज का एक नंबर भी होता जाता है. फॉर एग्जांपल एक कोई इमेज पहले बना लेते हैं. इसके लिए हमको हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर का सीड नंबर पता करना है, उसका यूसेज क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगा. उसका अगर हमको यूसेज पता करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड अ रिएक्शन दैट इज इनवलप. जैसे हम इनवलप रिएक्शन ऐड करेंगे, इट विल प्रोवाइड मी नेक्स्ट. ये हमको मेन चैटबॉट में दिखा रहा है. जैसे हर एक का होता है उसका एक ही चैटबॉट है. सो दिस इज द सीड नंबर.
हर एक इमेज का एक स्पेसिफिक सीड नंबर होता है। ये सीड नंबर हमको वहाँ पे यूजफुल होता है जब हम सपोज किसी एक स्पेसिफिक इमेज को बेस बना के उसके मल्टीपल वेरिएंट्स निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, तब हम सीड नंबर यूज करते हैं। थोड़ा एडवांस हो जाएगा, सो इसको हम आगे इन अपने एडवांस सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इट्स लाइक जब हमको पार्ट्स में निकालना रहता है। फॉर एग्जांपल स्लैश इमेजिन हॉट डॉग। अब हॉट डॉग हम करेंगे तो आई एम नॉट पुटिंग इट बिकॉज इट विल टेक टाइम। हॉट डॉग जैसे जो खाने वाला होता है वो लेगा उसको। बट हम चाहते हैं कि 2 वर्ड्स का एक पैरामीटर लेके हम चलें, तो उसके लिए भी यूज दिस कॉल डबल कोलन सेपरेटर। हम्म, आपने कोई रियल यूज केस वाला अभी इमेजेस को जनरेट कर रहे थे फॉर मिडजर्नी? हाँ, मतलब कैरिकेचर बेस में काफ़ी यूज़ हो रहा है। प्रोड उसमें स्टॉक फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा है, उसका मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉम्प्ट लेके आई एम प्रोड्यूसिंग दैट। माने कोई क्लाइंट का काम के लिए यूज किया क्या समवेयर? हाँ, अभी वही स्टॉक का जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। सो एक फायर फाइटर के लिए जैसे इमेज चाहिए था, तो ओके इस तरह की इमेजेस जनरेट की हैं। ओके। अब चेहरा भी इंडियन लग रहा था। हाँ, इंडिया, इसीलिए हमने प्रॉम्प्ट में डाला इंडियन फायर फायर फाइटर यंग मैन वेयरिंग दिस फुल बॉडी फोटोग्राफी। एक इसका भी ट्राई किया कि जो फूड डिलीवरी के लिए होता है ओके विद इंडियन गाय। आई पुट एक्टिवा, बट ये स्पेसिफिक जो जेनरिक स्कूटर है इसको लिया है क्योंकि ये उसी को यूज करता है जो ऑलरेडी इनके पास डेटाबेस है, एंड इट्स रियली बैड विद टेक्स्ट। तो अगर हम कुछ टेक्स्ट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल लोगो में अगर हम डालते हैं जनरेट अ लोगो विद दिस नेम, वो हमेशा कुछ ना कुछ नाटक कर देता है। तो इट्स लाइक टेक्स्ट के लिए इट्स स्टिल नॉट मैच्योर इनफ। अब इसमें जैसे हमने प्लास्टिक टॉय फिगर फॉर्मेट में किया है, मिनिएचर 8 के, एक्सट्रीमली डिटेल्ड। सो ओके। इस तरह का एक आउटपुट आया है। ये एक मैंने रेफरेंस से देखा था, एशियन बिजनेसमैन, उसका स्टॉक इमेज किस तरीके से किया है। सो मैक्सिमम स्टॉक इमेजेस में भी यूजफुल हो रहा है। नेक्स्ट पिक्सार में भी ट्राई किया था कुछ कैरिकेचर। तो इस तरीके के जो हम इलस्ट्रेशंस बनवाते हैं बेसिकली, बट वी कैन मेक इट नाउ मिड जर्नी यूज करते हुए। ये तो इसका सिंपल प्रॉम्प्ट है, इंडियन मदर्स एंजॉयिंग फूड पिक्सार स्टाइल एनिमेशन। आपको स्टाइल समझना जरूरी है थोड़ा। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं एक आपको जो शीट शेयर किया स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, रीजन इसका यही है। हम्म, और इसमें ये रहता है हर बार जब हम कुछ डालते हैं तो इट्स लाइक इट प्रोवाइड्स डिफरेंट कैरिकेचर्स। अब जो मैं अभी आपको सीड वाला एग्जांपल दे रहा था कि सीड का यूसेज कहाँ आता है, फॉर एग्जांपल हमने ये कैरेक्टर लेके रखा है, हम्म, बट हम चाहते हैं कि यही कैरेक्टर रिपीट हो हम्म। मल्टीपल उसमें। फॉर दैट वी यूज दिस सीड इफेक्ट। अगर आपको एक स्टोरी बुक के लिए इमेजेस बनाना है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली यू हैव मल्टीपल इमेजेस ऑफ द सेम पीपल एग्जैक्टली। रिपीटिंग। हाँ, अब जैसे हॉट डॉग वाला आपको देख रहे होगे, तो पहले क्या था, अगर मैं सिर्फ हॉट डॉग डालता तो वो खाने वाला हॉट डॉग आ जाता। हाँ हाँ। बट हमने जब कोलन से सेपरेट करके डाला है, तो हॉट इज विद हीट एंड डॉग इज विद डॉग। तो हीट प्लस डॉग का कॉम्बिनेशन लेके इसने बनाया है। हाँ और आपको किसी में किसी को इंटेंसिफाई करना है, फॉर एग्जांपल
हम चाहते हैं हीट एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाए, तो हॉट कोलन कोलन इसमें हम नंबर 2 डाल देंगे डॉग से पहले, तो हॉट डबल हो जाएगा. सो दैट विल बी दैट हाउ इट लुक. ये हमारा मदर्स एंजॉयिंग फूड एंड पिक्सार स्टाइल एनिमेशन हो रहा है. तो मिडजर्नी का भी आपका ओपिनियन में क्या है, लाइक दिस इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन ओनली कि द प्रॉम्प्ट्स एंड द वे इट विल वर्क विल बी द सेम? इन्फॉर्मेशन आपका क्या है लाइक राइट नाउ? हाँ, ये अपडेट होता है जैसे 5.2 आ गया है वर्जन, तो इसमें एक और क्या फीचर आ गया है कि एक जूम इन वाला इफेक्ट. मैं करके दिखाता हूँ अभी. जैसे हमारा ये प्रॉम्प्ट बन गया, अब इसमें इस वेरिएशन में हमको जो सबसे अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल दिस, तो इसका हम इन लार्ज वर्जन बनाएंगे. आप अब स्केल जैसे ये आ गया, इसमें वी कैन जूम आउट. फॉर एग्जांपल अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और स्पेस मिले सो दैट वी कैन पुट टेक्स्ट इन इट, तो वील जूम आउट. तो ये उसी थीम को मेंटेन करते हुए किस तरीके से और जूम आउट होके और वाइड एंगल जा सकता है. विल डू. इसका बस एक नेगेटिव ये है कि जब ये वाइड जाता है तो डार्क बहुत हो जा रहा है कई जगह. सो ये इसका एक फीडबैक आ रहा है, बट इन अपकमिंग वर्जन्स इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव. अभी 62% ही हुआ. लेट इट कंप्लीट. इट्स लाइक ये सारी चीजें अगर बनने को रहे तो 1 दिन 2 दिन लेती हैं, बट स्टिल 1 मिनट में भी बन रही, फिर भी हम लोग को पेशेंस नहीं आ रहा है. इट इज टेकिंग जब टाइम, इट इज टेकिंग जब टाइम. जब जब मिलने लगता है ना, व्हेन वी गेट, वी आर ह्यूमंस आर लाइक दैट ना, हम लोग का हैबिट है. हाँ, अभी देखिए कि जैसे ही जूम आउट किया तो कैसे उसने चीजों को और वो एक्सपेंड कर दिया, और उसके भी 4 वेरिएशंस दिए. इट ऑलवेज गिव 4 वेरिएशन सो दैट यू हैव एन ऑप्शन कि कौन से पे आपको वर्क करना है. तो इसने और एलिमेंट्स साथ में बिछा दिए, पीछे एक्सपेंड कर दिया, यहाँ लाइटिंग ले आए. सो एक क्वेश्चन है लाइकवाइज. अभिषेक, एक क्वेश्चन है, कैन यू गिव इट अ रेफरेंस इमेज फ्रॉम आउटसाइड लाइक वैन गो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल. एंड पोर्ट्रेट एज अ बेस? एंड इस पे डिटेल बढ़ गया आपने जो दिया ना, मुझे लगता है कि तो डिटेल काफी बढ़ गया है लाइक. फॉर एग्जांपल इसको हम सेव करते हैं. ये लेट मी डू अ फेस स्वैप, सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. थोड़ा एक एडवांस लेवल पे जाते हैं. और फेस स्वैप. हम्म ओके. मैं करके दिखाता हूँ सो दैट स्टेप बाय स्टेप क्लियर और मेरा भी रिवीजन हो जाए. रादर देन अगर मैं एक साथ दिखा दूंगा तो वो फील नहीं आएगा. कॉमन. इसमें मैं अपनी भी इमेज लेके कर सकता था, बट ठीक है अभी है नहीं, वो फिर से डालना पड़ेगा. इंडियन मैन को टर्बन के साथ ही जोड़ा लगता है. हाँ, वो एक जो परसेप्शन बना हुआ है जो एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है, इसलिए हमको एक पैरामीटर और होता है नेगेटिव कीवर्ड डैश डैश नो. वो मैंने भी बताया नहीं, मिस अगर हो एक गया. एजुकेटेड इंडियन मैन डालेगा तो शायद कुछ और निकल आएगा. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई चाहते हैं कि टर्बन नहीं चाहिए, तो हम कॉमन इंडियन मैन डैश डैश पैरामीटर नो और उसके बाद टर्बन, तो जो भी ऑप्शंस देगा वो विदाउट टर्बन देगा. तो इसमें से फॉर एग्जांपल हम
थर्ड वाली लेते हैं क्योंकि इसमें वो कम है। एक बस एक फोल्डर बना रहा हूँ ताकि हम्म, इन सेकंड हम जनरेट कर लेते हैं। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस कॉमन मैन को आयरन मैन बनाएंगे, या फिर okay. फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज। Squares में कर रहा है Terminator. I don't know. कुछ भी हो डॉक्टर सकता स्ट्रेंज का थोड़ा जैसे फ्रेंच कट इसका है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मैचअप कर है। जाएगा। मैं भी बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज और रियलिस्टिक कर सकते हैं, बट टू सेव टाइम एंड मेक इट क्विक। You simply on below that thing you're writing Doctor Strange, yeah? हाँ, सिंपली बेसिक प्रॉम्प्ट डाला है वो एक, क्योंकि अभी दो हम इमेज कर रहे हैं, एक डॉक्टर स्ट्रेंज है, दूसरा वो कॉमन मैन है। अभी हम फेस स्वैप करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस पे उस कॉमन मैन को लेके आएंगे। Oh, okay. कई टूल्स थे पहले इस तरह के, बट ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाता है। सी पेशेंस खत्म हो गया है। जनरेटिंग सो फास्ट एंड वी आर फीलिंग कि नहीं, that is okay. तो उतना पेशेंट. थर्ड वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको स्पेस मिल रहा है, फेस भी थोड़ा सा आ रहा है, सो विल यूज दिस। सो दिस इज डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है। ओके, आप दोनों इमेज डाउनलोड कर दिए पहले. हाँ, तो बेसिकली हमको वो चाहिए कि किस में हमको बनाना है और किसको बनाना है। इसके लिए बेसिकली हमको क्या रहता है कि फेस स्वैपर एक, लेट मी ओपन दैट लिंक। इनसाइड फेस स्वैप करके एक एक्सटर्नल टूल है जो डिस्कॉर्ड के अंदर ही बना है, ओके. तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली एक स्पेसिफिक लिंक होती है इनसाइड फेस स्वैप, उसको लेके हम तो मिडजर्नी के बेस पे बना हुआ क्या? एग्जैक्टली So guys, I'm sure that some of you, for me also a lot of things are new. Whatever Abhishek is teaching, and आपके लिए भी थोड़ा new हो सकता है. But I feel like we should be able to know the possibilities at least to understand what we should be pursuing and what shouldn't we be pursuing. And based on that, we decide what we want to learn and all. So that's why we thought of having this session as a starter kind of thing. Yeah, please carry on, Abhishek. हाँ, तो जैसे ही उस लिंक के थ्रू हमने डिस्कॉर्ड में लॉग इन किया, इट्स लाइक इनसाइड फेस बॉट, इट्स अ सेपरेट बॉट दैट आल्सो वर्क्स ऑन डिस्कॉर्ड। तो इसमें एक चीज होती है कि हमको सिलेक्ट करना पड़ता है सर्वर। तो जैसे हमने पहले एक टेस्ट सर्वर बना के रखा था, उसी का हम यूज करेंगे। सो ऑलवेज द स्टेप इज कि सबसे पहले एक सर्वर हम बनाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बना के दिखाया था, टेस्ट MJ2। उसके बाद जो मैंने लिंक एक शेयर करूंगा इनसाइड फेस की, उसमें हम जाके कंटिन्यू करेंगे और ऑथराइज करेंगे। अब हम वापस अपने सर्वर में आ गए जिसमें हमने इनसाइड बॉट को एक्सेस दे दिया है। Okay.
So first step is to save ID. It's like ये हमेशा एक हमको जो अपनी सेव आईडी फॉर एग्जांपल दैट जो हमारी इमेज है इन आवर केस टेस्ट कहाँ पे सेव किया था हाँ, तो इन आवर केस हमारा जो कॉमन मैन है वो हमारा सेव आईडी है, क्योंकि इसको हमको चेंज करना है, इसको सेव करना है, तो आईडी नेम हम ये मांगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कमांड दिया सेव आईडी /save id, जैसे कमांड डाला उसने अपलोड इमेज करने का ऑप्शन दिया, एंड नाउ वी कैन हैव आईडी नेम फॉर एग्जांपल रमेश। इट्स लाइक कोई भी हम अपना नाम डाल सकते हैं, अगर हमारा होगा तो अभिषेक, आपका गोवर्धन, यू कैन सेव द आईडी। तो कमांड सेंड यानी कि वो सेव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज टू वो चेहरा और उस नाम का बीच में उसका रिलेशनशिप बना। एग्जैक्टली वो डेटाबेस सेव हो गया। अब सेकंड है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। ये हमने सिंपली अपलोड कर दिया प्लस आइकन दबा के। फॉर एग्जांपल कभी भी हमको कोई अपलोड करनी रहती है इमेज, हम उसको प्लस दबा के अपने सर्वर से अपने चैट से वी कैन अपलोड इट, एंड राइट क्लिक करके एप्स पे आएंगे एंड इन स्वैपर करेंगे। आप ये वाला सर्वर में इन स्वैपर को ऑथराइज किया है और पहले वही काम किया था। हाँ। Okay. तो जो अब वो बंदे की इमेज थी उसको इसने लेके ट्राई किया है कि कैसे वो उसमें करे। तो ये हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज रमेश उस बंदे के साथ आ गया। कॉम्बिनेशन में बन गया, इंटरेस्टिंग। सुपर हीरो का रूप में किसी को पेश किया जा सकता है, लाइक एग्जैक्टली। अगर आप अभी हमको इमेज व्हाट्सएप पे करो तो आई कैन ट्राई विद यू और जो भी भेजना चाहता है कि वो अपना ग्रुप पे दे कैन शेयर है। गुरुवार को इमेज ट्राई करते हैं। It's already 10 times better than a paid workshop or of growth school. क्या दुर्बार अभिषेक, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, आपको परस्यू करना चाहिए। like straightforwardly is talking Abhishek, na? No bullshit. He's trying to just let us go through whatever he is actually Thank you. plan भी नहीं किया, but it's a great compliment for you Abhishek. मानसी मैम, sorry I was not reading the chat, sorry about that. अभी दरबार का भी है चैट, देखा नहीं आपने? हाँ देखा। Thank you दरबार। Mansi ma'am is saying, can you give it a reference image from outside like Van Gogh self-portrait as a base? ये थोड़ा आप elaborate कर सकते हो मानसी मैम एक बार वॉइस पे आके? I just meant कि suppose I want to use Van Gogh self-portrait, basically an existing art form as a self-portrait, और उसी को मुझे modifications करने हैं. Exactly. Possible in this? Midjourney में सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट क्या है कि जो मैं स्टार्टिंग में स्टाइल का बता रहा था ना, पिक्सार स्टाइल, दैट स्टाइल, नेशनल ज्योग्राफिक स्टाइल, सो हियर वी ऑलवेज, अगर हमारा कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी में भी अगर कोई स्पेसिफिक फोटोग्राफर दैट इज हु इज वर्ल्ड फेमस, उसका अगर स्टाइल डाल के करेंगे सो इट विल एग्जैक्टली उसी का ही स्टाइल लेके इट विल रिक्रिएट। इनफैक्ट इन लोगो डिजाइन, अगर हम किसी स्पेसिफिक लोगो डिजाइनर का नाम करके करेंगे तो इट विल क्रिएट स्पेसिफिकली अ लोगो अराउंड दैट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैम ने बताया कि अगर हम किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, लोगो डिजाइनर, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम वेरियस आर्ट फॉर्म्स को जाने, कौन कौन उसमें एक्सेल कर रहा है और उसको हम अपने प्रॉम्प्ट में यूज करेंगे, सो इट विल क्रिएट वंडर। सो दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रा एज थिंग अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि आपकी फील्ड में, आपके जॉनरा में कौन कौन फेमस पर्सनालिटीज हैं। Oh, sorry, I just meant that suppose, okay, so let's take
Mona Lisa, for example. If you're Uh-huh. taking Mona Lisa and she's, let's say, winking at you, or she's got her, she's got a peace sign up. Is Uh-huh. that something that's possible, or they don't allow you to use existing No, art? we can use it. I can try it sometime. जो नहीं allow करते हैं, it's like कि कोई ऐसा थोड़ा पर्सन सा का नाम vulgar हो जाता है। प्रॉब्लम, मार्क vulgar जकरबर्ग, समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट अभी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। गोवर्धन जी, मनीष जी, लुकासो वाले। हाँ So हाँ I was trying to create a stock image. वो matrices का उनका काम है। So basically I was creating a stock image where a beautiful girl is lying on a mattress. So I simply write down that prompt कि a beautiful girl lying on a mattress near a window. So it blocked me because वो थोड़ा सा उसको ऑप्शंस वे में लेके चला गया। So अरे जहाँ पे he feels कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं, it always blocks in the sense कि वो सिर्फ उस prompt के लिए block करता है। आप next कोई भी prompt use कर सकते हो। एक और इसमें नेगेटिव चीज याद आ रही है अब तो विद टाइम। जैसे अब इसमें देख रहे होंगे कि हाँ किसी ने पॉइंट किया 6 फिंगर। सो इसके लिए वी ऑलवेज यूज दैट नेगेटिव प्रॉम्प्ट नो एक्स्ट्रा फिंगर। नेगेटिव हमको डालना पड़ता है बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ मिड जर्नी कि फिंगर्स के साथ हमेशा खेल जाता है। कभी 5 कभी 6, कभी कान से फिंगर निकाल देगा, कभी कुछ भी कर देता है। सो विद टाइम इट इज इम्प्रूविंग बट स्टिल देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। Yeah, it's good that आपने मतलब ना you were able to learn this thing in some time. सो नेगेटिव प्रॉम्प्ट का भी मैं बेसिक एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, सो इट विल बी मोर क्लियर। जैसे स्लैश इमेजिन बॉल ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में क्या है कि मल्टीपल फ्रूट्स होंगे बट वी वांट कि उसमें बनाना नहीं हो। Okay. सो जस्ट लाइक नेगेटिव कीवर्ड इन एसईओ। 2 डैश यूज करते हैं यहाँ पे हमेशा। हाँ, कोई भी हमको पैरामीटर यूज करना होता है तो इसका सिंटेक्स है एक तरह का डैश डैश। तो आपको बनाना पसंद नहीं है क्या? नहीं, इनफैक्ट उल्टा है, बनाना ही पसंद है। एक तरह का सबसे लेजीएस्ट फ्रूट है, ना हाँ, धोना ना कुछ करना, बस छील के खाना। फास्टेस्ट है ना, एनर्जी ड्रिंक का तरफ है, मतलब इतना फास्टली बट कंज्यूम उसमें एक है कि वो न कम पका होना चाहिए ना ज्यादा पका होना चाहिए, बस एक वो है। आप डिड यू ट्राई दिस बनानास व्हिच आर अवेलेबल इन साउथ, जो या आई ट्राइड, वो एक छोटा वाला फेस का होता है, दैट इज टू येलो, स्वीट। येलो हाँ, स्वीट भी है, थोड़ा सा खट्टा भी होता है वो। एग्जैक्टली। तो यू कैन सी कि हमारा बाउल ऑफ फ्रूट है बट नो बनाना। दैट नेगेटिव पैरामीटर वर्क्स लाइक दिस। हाथ भी नहीं धोना बोल रहे हैं, हाथ हाथ बोला, हाथ एग्जैक्टली। कंप्यूटर ज्यादा यूज करने वाले बंदे को हाथ धोना पसंद नहीं है ना, फिर सुखाना पड़ता है उसको। गाइस आई थिंक टिल दिस टाइम एनी थॉट्स, क्योंकि हाँ ये तो मुझे लग रहा है सो कि ऑलमोस्ट वी आर पॉसिबिलिटी, यूजिंग, हम बेसिक का तो जितना था मैक्सिमम कवर कर लिया। नहीं पॉसिबिलिटीज काफी दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा लर्निंग कर तो है, एंड ट्राइंग टू यूज इट वेरी वेरी क्रिएटिवली एंड स्टफ। जैसा अभी क्या है ना, मैंने रिसेंटली देखा है कि एक बंदा ने क्रिएट किया, जो मैंने ट्राई कर रहा था रिसेंटली, एक पोस्ट कर रहा है मैंने, केज फाइट बिटवीन मार्क जकरबर्ग एंड एलोन मस्क। एंड मैंने मिडजर्नी यूज नहीं किया, बट आई फेल्ट अगर ऐसा चीज आप इमेजिन करते हो, आप उसको क्रिएट कर पाते हो, विच इज जनरली वेरी टफ ना, केज फाइट बिटवीन, मतलब बॉक्सिंग बोल सकते हैं कि एलोन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग बॉक्सिंग विद ईच अदर।
Do you think it will directly create or कुछ issue होता है उसमें? we can create. अब Try जैसे for करें क्या example, एक बार? Try कर सकते हैं क्या? Do you think it will work? yeah, it can. एक और एग्जांपल आई वुड लाइक टू, फॉर एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी ओनली, कि जैसे हम स्टाइल्स डालते हैं तो कैसे लाइटिंग का इफेक्ट देने से द सेम प्रॉम्प्ट कैन चेंज. फॉर एग्जांपल स्लैश इमेजिन, Oh, you're getting more descriptive now. Huh? Prominent Yeah, corner so- student sipping coffee near window. Okay. अब इसमें व्हाट वी कैन ट्राई, लाइट के साथ खेल सकते हैं, फोटोग्राफी स्टाइल के साथ खेल सकते हैं. Hmm. तो लेट्स प्ले विद लाइट्स. सो अगर हमारा जैसे गोल्डन लाइट है, लेट्स कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड we'll use this same prompt, just changing the light effects. अभिषेक, आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से who are the people who are using Midjourney very much? Like what kind of people? Like marketers के अलावा मुझे लगता है कि mostly artists are using it more than marketers. That's what I am assuming. What do you say? हाँ, अभी इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे ही पोस्ट देखा था. अगर ये ग्राफिक नॉवेल वाले भी अच्छे से यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली उसमें वो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट आ जाता है. करेक्ट करेक्ट. कैरेक्टर डिफाइन करके पूरा उसका स्टोरी बोर्ड करना. अब इसीलिए LinkedIn वो जो मैंने outreach- आपको हाँ पॉइंट बताया था, वो सीड वाला, वो वहां पे आ जाता है इनफैक्ट. LinkedIn outreach कर रहे हो क्या? मल्टीपल अकाउंट्स है. नए क्लाइंट्स के रहते हैं multiple. अच्छा, क्लाइंट्स का LinkedIn मैनेज कर रहे हो. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि एक अभी कैंपेन किया ब्रिटानिया ने, हम्म. इस तरीके से यूज करके इमेजेस बनाए हैं. मिड जर्नी से बनाया, उसमें अपने कुकीज को यूज कर लिया. ये सारा मिड जर्नी से बनाया हुआ है. हाँ, ये मैं देखा था रिसेंट का केम प्रोसेस. एग्जैक्टली, तो मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी किया था. और लेट मी सी इफ आई कैन शो यू prompts response. Okay, so cookies Britannia. हाँ. तो ये प्रॉम्प्ट था जो जनरेट किया गया था. इसको उन्होंने, इसमें जो बेस्ट यूज हो रहा है दैट इज कि आपको फोटोशॉप भी आता है एंड आप प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट कर रहे हो. सो जितना वो चीज करके करोगे उतना बेटर इट विल कम. अब जैसे मैंने आपको पैरामीटर्स का लास्ट में बताया, जो पैरामीटर सब डाल रखे हो शायद. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे वो पैरामीटर जो मैंने एक एक करके आपको बताया, हम्म. दैट इज कमिंग ऑल एट वंस. सो अगर एक साथ में आपको बताता तो इतना इट वुडेंट हैव मेड दैट सेंस. सो एक एक करके बताया. अब आपको जैसा यूज करना है यू कैन यूज. फॉर एग्जांपल स्टाइलाइज 750, तो और एक क्रिएटिव वे में आ गया. 1000 हमारा मैक्सिमम लिमिट है. ये वर्जन है 5.1, अभी क्या है 5.2 आ गया है. सो यू कैन यूज 5.2. मतलब मिडजर्नी का वर्जन है क्या? एग्जैक्टली, दिस अच्छा. इज क्वालिटी, दिस इज एस्पेक्ट रेशियो 4:5. सो लाइकवाइज दिस कैन बी जनरेटेड. ये सारे जो थे उन्होंने मिडजर्नी से जनरेट करके फिर फोटोशॉप पे वर्क किया. अच्छा, फिर से उसको एडिट किया होगा. एग्जैक्टली. ये टाइम तो बहुत ले रहा है. इसको भी बोलेगा क्या ऑब्सीन बोल के? ये भी समझ गया कि खेल रहे हैं हमारे साथ, हम नहीं कर रहे. इमोशंस है इसके अंदर. सीड वाला पॉइंट मिस किया बोल रहे हैं दुर्बार.
उसी बात पे बनता है। सीड वाला एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या अभिषेक? ही हैज अ डाउट ऑन दैट. एक मिनट, सीड वाला पॉइंट। ओके कॉफी. ओके, हाँ मैं सीड वाला बता रहा हूँ। उससे पहले हैव यू ट्राइड क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट? हाँ किया था, बट अगेन इसमें सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट पे इट्स नॉट दैट मच सक्सेसफुल। इट्स लाइक उस टेम्पलेट के अंदर का जो कंटेंट है उसके लिए इट्स फिजिबल, बट टेम्पलेट जहाँ पे एक स्पेसिफिक हमको आर्ट वो मिले, दैट इज नॉट टू मच। वो अभी एक हमारे पास टेक्सचर का एक आया, इट्स लाइक वो मैं अभी सीड वाले के बाद बताता हूँ। सीड इज लाइक कि अब जैसे देखिए विंडो वाला आ गया, आई कम टू सीड पॉइंट। वुमेन इन कोजी स्वेटर सिपिंग कॉफी नियर विंडो गोल्डन लाइट, तो ये गोल्डन लाइट में आ रहा है ये सेम इमेज। आई कीप इट ओपन हियर एंड यूज दिस सेम पॉइंट। अब गोल्डन लाइट की जगह ब्लू आवर। अब इसमें व्हाट वी कैन सिंप्लीफाइड वे में डे नाइट कर सकते थे, बट लाइटिंग इफेक्ट से क्या है, दैट सिनेमैटिक लुक केम। अगर आप सिर्फ डे नाइट करते तो थोड़ा फ्लैट हो जाता, बट अगर हम लाइटिंग इफेक्ट डाल लें तो इमेज इट विल बिकम मोर रिच। सो जितना ज्यादा आपको आर्ट फॉर्म्स, जितना ज्यादा आपको पैटर्न्स, एक एक नॉवेलिस्ट, इनफैक्ट अगर कोई अच्छा नॉवेलिस्ट है, ही कैन बी द बेस्ट प्रॉम्प्ट जनरेटर इन मिडजर्नी। लाइक कैसे वो वर्ड्स के थ्रू उस पिक्चर को विजुलाइज कराता है, इज द सेम वे इट कैन बी यूज्ड। ओ सॉरी, मैंने प्रॉम्प्ट नहीं डाला, वेरी बेसिक स्लैश इमेजिन। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं डाल के बैठ जाता हूँ, आता नहीं है, बट लेटर ऐसे ही कि प्रॉम्प्ट तो डाला ही नहीं था। चैट कर रहे डायरेक्टली, ह्यूमन बीइंग के साथ चैट कर रहे लगा हुआ. एग्जैक्टली, की बॉट के साथ कर रहे हो. सबकॉन्शियस में फीड है ना। बॉट को पता नहीं ना वो चीज. अब ब्लू आवर में एक तरह से जो इवनिंग का टाइम होता है, ब्लू आवर स्पेसिफिकली जब एकदम सनसेट हो जाता है और हाँ, तरह से हल्का सा रात लाइट होने लगती बचता है. है, दैट ब्लूइश स्काई। आप सो मैंने बाकी सब चीज सेम रखी, व्हाट आई चेंज्ड दिस लाइटिंग इफेक्ट। जनरेट हो रहा है. तो देख रहे हो कि आपकी सिटी के बाहर भी लाइटें जला दी, कितना क्रिएटिवली। हाँ, थोड़ा सा इमेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया लगता है. एग्जैक्टली। सो दिस इज गोल्डन लाइट सुबह का टाइम, दिस इज ब्लू आवर शाम का टाइम, या जस्ट डे एंड नाइट बट इन मोर आर्टिस्टिक एंड रिच वे। या मतलब क्वालिटी इज वेरी एनहांस्ड, अच्छा लगता है. या सो अब हम सीड पे आते हैं, लाइक इस पिक्चर मुझे क्या लग रहा है ना, जैसा भी किसी ने पूछा सोशल मीडिया वाले के बारे में, आई एम सीइंग लाइक डायरेक्ट टेम्पलेट जैसा नहीं, बट इसको वी कैन यूज इट एज अ सपोर्टिंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट और टेक्स्ट ऐड करने के लिए इसके ऊपर. लाइक यू कैन यूज दिस एज एन इमेज एंड विद DID। डीआईडी नहीं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया के लिए भी कुछ पोस्ट आप बना रहे हो. हाँ, कॉफी पकड़ के अभी लड़की कुछ सोच रही है, you need to add some text to this to make it sense, like marketing angle लेके आने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा साथ में. that is how it should work. सो जो सीड था हमारा, बेसिकली सीड क्या होता है, इट्स लाइक हर इमेज का एक नंबर होता है स्पेसिफिक। अगर उस इमेज को एज अ रेफरेंस हमको यूज करना होता है, वी यूज दिस सीड नंबर। तो सीड नंबर पता करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज इमोजी। फॉर एग्जांपल इसमें वी यूज एनवलप। एनवलप एक तरह का इनका कमांड है कि वहां से पता भेजो कि भाई क्या नंबर है इसका, सीड नंबर। तो यू कैन सी ये सीड नंबर यहाँ आ गया। अब अगर हमको इसको एज अ रेफरेंस लेके चलना है, फॉर एग्जांपल इसी इमेज को, तो फॉर एग्जांपल स्लैश इमेजिन गर्ल इन जंगल। अब इसमें जो मैं करने जा रहा हूँ, देयर इज नो 100% एश्योरिटी कि इट विल
create exactly, but हाँ closest जितना हो सकता है it will happen. मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया. सेम फेस यूज किया एंड जंगल में बोल रहे हैं आप. हाँ, मैंने इस इमेज का सीड लिया so that अगर ये इमेज है तो आई एम यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस with the same girl in jungle. Let's see how what it produces. ये अभी 100% एक्यूरेट है कि नहीं पता नहीं. accurate नहीं है, but let's try. कई बार होता है, कई बार नहीं होता. So इसीलिए कंसिस्टेंसी के लिए कई अलग अलग तरीके हैं जो we follow. वो कभी जब हम एडवांस वाला करेंगे तो we can discuss that. I think it's not that accurate क्योंकि इसका भी फेस इतना क्लियर आया नहीं है. हाँ साइड फेस है ना वो. या सो सीड का बेसिकली अब जैसे उसने कर्ली हेयर को एक तरह से ले लिया एज कैरेक्टर्स ले लिया लगता है वो. हाँ. कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज. दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट. ये वाला ये इसमें थोड़ा सा छोटी उम्र की लग रही है. हाँ क्योंकि थर्ड इमेज थोड़ा मैच कर रहा है ऐसा लगता है कि बट या ओके आई पुट गर्ल. गर्ल को इसने क्या क्या एक तरह से बच्ची ले लिया बट दिस इज नॉट अ गर्ल, दिस इज अ लेडी, वुमन. वुमन लेडी. सो भाई कई फैक्टर्स होते हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. लेट मी ट्राई दिस सो दैट वी आर मोर क्लियर. स्लैश सेम लेडी है. it still can't be accurate. I'm just trying. So Ultimately you're trying to understand the language of the bot by that's trying. like trying and see how it works. जैसा जैसा हम लोग we're trying to communicate with a dog or cat or something. Yeah, just like that. So yeah, this is very much what I can share. Let's see. Can't we add command like your previous generated image, just like that? No, I Create mean that won't work. it don't take that basically. That's why for the same reason we have this seed. क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है बट मल्टीपल उसके साथ कर रहा है, यूजर्स के साथ. सो फॉर देम प्रीवियस इमेज हमेशा चेंज होती रहती है. Okay, but in case of like you private rooms, हाँ बट वही स्टिल इट्स इन दैट लर्निंग फेज कि वो अभी अच्छा accuracy नहीं अभिषेक, हो पाएगा. इंटरेस्टिंगली आपने जो पिछले बार जो किए थे ना, जो कार्टून वाला, जो इंडियन मदर एंड डॉटर वाला, उसमें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का रिजल्ट्स उन्होंने दिया है ना. दैट्स व्हाट हाँ वी कुड सी. एग्जैक्टली क्योंकि पिक्सार स्टाइल क्या करता है, पिक्सार स्टाइल में हमेशा फेस मोर सो सेम ही हो जाता है किसी न किसी. जितना रियलिस्टिक फेस होता है उतना एक्यूरेसी कम होती जाती है रीजनरेशन में. या आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग. पॉसिबिलिटीज काफी है. लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट. कंसिस्टेंसी के लिए वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इन सम अदर सेशन कि और क्या क्या तरीके से वी कैन ट्राई एंड हाउ वी कैन एक्सप्लोर मल्टीपल. I think right now you're trying to use it for stock images, creating stock images and characters. Like जो Yeah. firefighter वाला आपने किया है, that is interesting. स्टोरी बोर्ड्स एंड ऑल. Maybe something like that. And पता नहीं, कुछ लोग मैं सुन रहा हूँ कि some people sell this kind of images on Adobe stock or something like that. हाँ they do but again ये एडोबी स्टॉक वाले धीमे धीमे उस चीज को कम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि सेम इमेज जो अपलोड हो रही है वो फ्री में कोई और लेके यूज कर रहा है. like is it okay to use for commercial use also? If like I'm No. using someone else created images. You can use but you can't claim a copyright for that.
Okay. Okay. पेड I mean, प्लान में हम लोग affiliate- यूज कर सकते बोल रहे हैं ना अभिषेक? sorry, जो पेड प्लान में है वो यूज कर सकते हैं बोल रहे, कमर्शियल यूज नहीं करके? कर सकते हो, बट व्हाट हैपेंस कि नो कॉपीराइट क्लेम। हाँ नो, क्योंकि आप हमने जैसी इमेज की इट गोज, वो हमारे प्राइवेट रूम में है, स्टिल इट इज एक्सेसिबल. लेट मी शो यू हाउ. Sorry, with that, can you also show how you download it if you want a high resolution? Yeah. Yeah, that is important one. Yeah, good question, Mansi. So for example, this is the image. We can always go and open in browser, simply right click, save images. It's downloaded. But this is like 300 DPI types. Printable format hai. Not that much resolution. We have to upscale it through other tools. Like online, we have upscaling image tools. Using that, we can upscale. And also we can give prompts like 8K, 16K as well. So it will create more high resolution images. आप क्रिएट करते समय ही आपको देना पड़ेगा, Like 8K. और इट अंडरस्टैंड डायरेक्टली 8K, ऐसा कुछ आगे पीछे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा. So it will give the same image, but in a higher resolution. बट हाँ, ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि अब जब वो जनरेट करेगा और इमेजेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस. हाँ, या राइट नाउ आई थिंक द फेस वाला जो चीज है वो चैलेंज है, वो नहीं इतना हाँ, दैट इज accurate. अ बिग चैलेंज, वो कंसिस्टेंसी लाना. दैट्स व्हाई अभी मैं उसी पे कंसिस्टेंसी पे ही वर्क कर रहा हूँ अभी बैकएंड में, कि किस तरीके से मल्टीपल है. सो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दैट सम अदर टाइम. सो अब जो किया है इसने, इट इज ऑफ मच हायर रेजोल्यूशन. अभी इसको डाउनलोड करें तो काफी हाई रेजोल्यूशन में आएगा. हाँ, ओके, वेटिंग अभी हुआ नहीं है बेसिकली. बट स्टिल जो अपस्केलिंग टूल है, वी हैव टू यूज दैट. आई मीन ऑनलाइन ऑफलाइन अदर. अभी आप कोई स्पेसिफिक टूल यूज कर रहे हो क्या? बिग जेपीजी? और अपस्केलिंग हाँ. है, बट अभी आई थिंक अभी मैंने नोट नहीं करके रखा है. आई विल डेफिनेटली शेयर इन ग्रुप समटाइम. ओके. एक दो टूल्स हैं दैट आई यूज्ड, अभी वो मिले नहीं रहे. आई विल शेयर दैट. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? आई थिंक हम लोग कुछ भी करके 11 बजा दिए. somehow it happens. No, no, like it's an interesting session, I would say. Yeah, definitely, Ashish. Now, देखो, we need to navigate. A lot of learning things, you know. No, Thank you. and because क्या होता है ना, डिस्कॉर्ड देख के ही मेरा कभी कभी दिमाग घूम जाता है, इसलिए मैं ट्राई किया. एक बार डिस्कॉर्ड देखा, उसका सिस्टम देख के ना दिमाग घूम गया, वापस चला गया. आई डिड नॉट ट्राई. एटलीस्ट अभिषेक के चक्कर में क्या ना, अभी थोड़ा सा आई एम एबल टू नो द सिस्टम, द सीक्वेंस, हाउ यू स्टार्ट. एटलीस्ट यू कैन बस स्टार्ट. वो स्टार्टिंग का एक वो है बस ब्लॉकेज, उसके बाद इट्स क्वाइट. This is interesting. Any other questions on the specific thing? Midjourney thing? All the prompts that you learned, were they available somewhere? And did you just have to find them, or was it something that you had to figure out on your own? या इट्स लाइक कि Midjourney documentation दिखा रहा है ना? What is हाँ. it? डॉक्यूमेंटेशन पे भी था, बट लेट मी शो यू. इट्स लाइक जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ कई ग्रुप्स को, एंड लिंक्डइन पे भी कई लोग शेयर करते रहते हैं. सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू, इट्स लाइक यू कैन जॉइन ग्रुप्स, मिडजर्नी ग्रुप्स इन फेसबुक. So what they do, they keep on sharing the prompts, reference prompts, क्या output generate हुआ. They will even help you like in multiple fonts की कैसे you can improvise on that or work on that. So
that is a big help in working in prompts, and baki it's like try and test every time. बट बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपना मिडजर्नी का वेबसाइट में है ना समवेयर. हाँ, एक और मुझे एक लिंक मिल नहीं रही है उसमें एक तरह से. लेट मी चेक, just a minute, let me. That is basically for references. Post क्यों? एप्लीकेशन मेमोरी मैकबुक में हमेशा ये मेमोरी का चेक कर रहा है. So this is the but this is also available only for paid version. Let me share the link in chat. शोकेस. Showcase, yeah. Okay. I mean, yeah, you could use ChatGPT as well. I believe you could directly ask from ChatGPT to write a Midjourney prompt for some particular image. That would also help. Yeah. Like there is a चैट जीपीटी के पास इतना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है क्या? जैसे लेटेस्ट प्रॉम्प्ट आ गया या फिर लेटेस्ट कुछ कमांड आ गया तो and there is a prompt generator tool. So yeah, you can create prompts using this. You can write artist के according आप कर सकते हो, styles आप डाल सकते हो. No, moonshot, huh? Prompt.moonshot.com. Yeah. Prompt.moonshot.com. You can provide artists, you can provide colors, chaos, seed, materials, different sort of parameters you can provide, and accordingly it create a prompt for you. Like comic book. You can even increase or decrease the intensity that you want to have. So that comic book एक prompt वो आ गया. अब depth of field basically photography में if someone is there तो depth of field की कितना blur आ रहा है. अगर full focus है तो एक तरह का portrait आएगा. बाकी अगर focus कम है तो एक wide angle shot आएगा with much clarity. Chaos जो बाकी, so it's like हम in fact इसमें अपना image भी upload कर सकते हैं for that inspiration कि this is image, something around this we want. And also one more thing is there through which we can see our prompt. It's like reference. What was reference? Something else. Just a minute. Describe, sorry, describe. So suppose हमने ये इमेज अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज की अपलोड की. So what Midjourney will do? He will suggest me prompts कि किस तरीके के prompts we can use to have this sort of image. So suppose अगर आपके पास कोई image है, you can definitely upload that and Midjourney will suggest कि कौन-कौन से prompts you can use. I mean, quite advanced prompts. You can modify it and accordingly you can use it. आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में काफी मतलब ना यूज होने वाला है. लाइक मोर देन व्हाट वी यूज इन मार्केटिंग. मार्केटिंग में भी यूज केसेस है बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ यूज केस फॉर द क्रिएटिव साइड. क्रिएटर्स के लिए काफी है मतलब ना आर्टिस्ट एंड डिजिटल डिजाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइन वाले.
just a minute. This is showcase. This is the bug sort of thing, because whenever I sign in, it makes me out of this showcase. So this, yeah, showcase thing, I'll definitely discuss some other time, how we can see, explore more about more inspirations and all. I think it is about to crash. नहीं कोई बात नहीं है अभिषेक, I know that's stuff. एक ही इसमें we can't cover everything. At least we got a taste of what it can offer and क्या कर सकते हैं, possibilities क्या है, and आप explore कर ही रहे हो तो if you are seeing any updates, please share in the group as well. Sure, That sure. people will be Abhishek. interested to understand what's going on and all. Sorry, one last question, Abhishek. Are you selling these images to your clients? Not directly, but yeah, we are using this as a part of our service. For example, we are mentioning them that this is certain stock. We are openly saying them that these are artificial intelligence generated images, but we have generated it using paid tools and through our specialization only. So yeah, indirectly we are charging for this. Okay, got it. So it's not like a separate charge, but it is a part of whatever you're Yeah, creating. yeah. We are not selling it separately because till now we haven't sold it separately. I mean, there might be certain people who will be selling it, but for now what we are doing, we are selling it as a part of our service Got it. and Thank you. letting them know, yeah, these are AI generated images and this is we have produced using this AI tool only. Got it. Thanks. Making your work easy using this ultimately. Recently, I mean, in caricatures, like we used to pay to this caricature artist and they used to take almost 4 to 5 days to deliver. But now, I mean, we are able to generate images quite fast using this. Caricatures in the sense that the firefighter thing that's the one you're talking Yeah, about? like the reference I gave, that mother-daughter eating, that sort of story-based caricatures. Okay, awesome. So guys, any other questions? I think all are silent. So any feedback for the session, please share the feedback. It will be great. Whoever is actually attending, because Abhishek was also a bit hesitant initially. Abhishek, like it's a great session. Like I have learned so many things. I was like, okay, I have already explored Midjourney. मैंने इसके जो free वाला version था उसको ले लिया, consume कर लिया था. And I was not like taking decision to go with the paid version. But after this session, I'm definitely going to buy this Midjourney paid session. Awesome. वो एक बार ट्राई करना पड़ेगा और उसके जो आपने बताए हैं जितने भी ट्रिक्स उन सबको यूज में लेके इमेजेस वापस से जनरेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा. या वन मोर थिंग लाइक हाँ, मिड जर्नी के बाद आई वाज एक्सप्लोरिंग leonardo.ai एज वेल. उसके अंदर भी लाइक वो थोड़ा बहुत उसके मिलता जुलता But है. Midjourney is the best, like. Midjourney is the best, right? Stable diffusion is भी नहीं No है, doubt. but yeah, right, no doubt. Thanks for this session, Abhishek. I'm looking forward one more session, like upgraded session. Yeah, definitely. We'll plan this advanced. Yeah, definitely. Thanks, Abhishek. Open भी नहीं किया किसी, मतलब we did not open up to everyone. We just had this for the club. Abhishek was also a bit hesitant कि हाँ कर This is पाएंगे. my first session I'm taking, and yeah, I was not. But it's really insightful without any PPT and it's a practical. Great session. Thank you. Thank you, Rajgopal. Yeah, everyone. Thank you guys. I think अभी हमारे पास at least we know like ना how to get started. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है get started होने के लिए. मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था. And I think at least we should not be ignoring the most common tools. So AI में जो अभी जो हो रहा है, मैं देखता हूँ ChatGPT and Midjourney, these two are like very very common and mostly used ones. So we should at least know what's happening and possibilities क्या देखना चाहिए. So it's great having you guys, and I'm happy that you guys enjoyed this session. So let us see how many of us
will start using Midjourney and create something awesome. Thank you, everyone. Good night. Yeah, thank night. you. Thank you, Abhishek, for doing this. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Okay, thank you.